दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। इस दिवाली तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे जीएसटी और आसान बनेगा और कीमतें भी कम होगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे। Prime Minister Narendra Modi on Independence Day announced reforms in the goods and services tax, which was implemented on 1st July 2017. और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। The key idea is to simplify the structure by reducing the current 4 tax slabs, 5%, 12%, 18% and 28%, into 2 main ones. 5% for essentials and 18% for most goods and services. However, a higher 40% rate will continue for luxury and sin goods. Under the new GST reforms, everyday essentials will become significantly more affordable, ranging from groceries and medicines to televisions and washing machines. Agricultural equipment, bicycles, and even insurance and education services are set to become cheaper, delivering direct relief to households and farmers, while boosting consumption across the economy. Luxury goods and sin products, including online gaming, will become costlier due to the new 40% GST slab designed to discourage non-essential consumption. GST 2.0 will levy only 5% on essential goods like farm products and milk products. This will give a huge boost to the Atmanirbhar Bharat economy, as a lower tax burden on households is expected to increase consumption. This masterstroke will help the Indian economy counter the 50% tariffs imposed by US President Donald Trump on India. The report forecasts an additional consumption expenditure of Rs 5.31 lakh crore in the economy, equivalent to 1.6% of GDP. अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। The GST reforms come as part of PM Modi's Viksit Bharat Mission 2047. This overall surge in spending is expected to generate an additional 52,000 crore in GST revenue in FY26. It will help boost the Indian economy after Trump's tariffs on India.